Good evening to all of you. Is this audible, visible, all clear? All clear? So, कौन पढ़ुथिले हमें कालीर क्लास रे? पढ़िलो जहाँ पढ़ी आम गत कालीर क्लास रे ताको पढ़िले समस्ते कि नहीं? समस्ते पढ़िले? ओके, बढ़िया. किसी डाउट? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एलपीजी ऊपर भी काली पढ़ी ना? ओके, गुड. ठीक है. How many of you are preparing for this year prelims? এই वर्ष prelims ପାଇଁ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି? Exclusively এই वर्ष prelims ପାଇଁ? এই वर्ष prelims ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନା almost. ठीक है. काली हमें देखते प्लानिंग ऊपर डिस्कशन स्टार्ट होता आज जीवा इकोनॉमिक रिफॉर्म. इकोनॉमिक रिफॉर्म ना रिफॉर्म कहले बेसिकली हमें कौन बुझुचे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफॉर्म? रिफॉर्म शब्द अर्थ कौन? अच्छा, रिफॉर्म को आसीबे केतरा क्वेश्चन दउची टिके कर दियन तापर रिफॉर्म को आसीबे. केतरा क्वेश्चन दउची ट्रांसफर पेमेंट आर मेड. क्वेश्चन इज ऑन ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट ता केमती दिया होई? इकोनॉमिक रिफॉर्म को आसीबे प्लानिंग ऊपर आज डिस्कस करियो. फर्स्ट प्लानिंग मींस जो 12 5 ईयर प्लान थिला, 12टा 5 ईयर प्लान थिला. विल डिस्कस अबाउट दोस प्लानिंग्स फर्स्ट. देखो इको ट्रांसफर पेमेंट्स आर मेड. ट्रांसफर पेमेंट केते बेले दिया होई?
example of some transfer payment कि मत कहबे example of some transfer payment what are the example of some transfer payment scholarship very good how old age pension and scholarship oh. So this is without exchange of economic activity example hela kono na example hela scholarship and old age pension scholarship and old age pension hela next product method of calculating national income this is also known as product method of calculating national income is also called as product method of calculating national income is also called as value added method. Output minus value added is called quick. Output minus value added is called intermediate consumption is called intermediate consumption. Next, which is the equilibrium condition of circular flow in the four sector model? Which is the equilibrium condition of circular flow in four sector model? जल्दी जल्दी कहबे तापर आसीबे केतरा टॉपिक जेटा हमें जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड रे कैलकुलेट करथले जीडीपी कैलकुलेट करथले कोथरे हमें ना एक्सपेंडिचर मेथड which of the following is included in the four sector model which is included in the four sector model देखो जोटा फोर्थ सेक्टर मॉडल नेशनल इनकम रे पढैतले तारि ऊपर बेस करी के क्वेश्चन अछि समस्त करिवे which is included in four sector model family farm government foreign sector family farm foreign sector or government which services are provided by families to farm
ऑल लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सब गुडा स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इटा को इजी क्वेश्चन देज लोपा प्रणाम प्रणाम लोपा केतरा क्वेश्चन करोची तापर आसीबी दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम हैला ओके अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस मींस बेस ईयर प्राइस this means what this means base year price this is called base year price रे calculate कला हम कौन कहउतले ताको that is called real income हैला करंट इनकम है करंट ईयर प्राइस बा नॉमिनल इनकम कहले मार्केट प्राइस रे कले ताको कौन कहउचे माने करंट प्राइस रे मार्केट प्राइस बा करंट प्राइस रे कले ताको नॉमिनल जीडीपी हैला ओके चलो तो ये हला किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन करैली गोटे बही कही प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया से बुक किए लिखिले प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया द बुक इज रिटन बाय whom प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया दिस बुक इज रिटन बाय whom एम विश्वेश्वराय वेरी गुड एम विश्वेश्वराय ऑल राइट बढ़िया तबरे एबे आसी हम फर्स्ट प्लान को फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिस वाज बेस्ड ऑन हरुद दोमार मॉडल इडू हमर डिस्कशन करियर थिला ना कालीर क्लास दिस इज बेस्ड ऑन हरुद दोमार मॉडल तो ये कौन कहूँ ये फोकस कला कहा पर ना ये कहला फूड सेल्फ सफिशिएंट से समय हम पाखरे फूड ग्रेन सफिशिएंटली जति की दरकार सेति की फूड ग्रेन थिला कि जति की फूड ग्रेन दरकार से समय हम पाखरे सेति की फूड ग्रेन थिला कि द आंसर इज नो कौन बोल से समय फूड ग्रेन दरकार जति सेति थिला कि नथिला तो जेहेतु नथिला हमर ऑब्जेक्टिव हला कोन ना फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करिया इन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है ना तले एठी कहा को एक्टिव रोल दिया जीवो स्टेट को ना मार्केट को whose role is active here state role or market role of the state or role of the market कहारो the role of the state or role of the market स्टेट को एक्टिव रोल दिया गला एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट हैला so 5 IITs established objective कौन थिला ना more agricultural production price stability आनिबा rehabilitation of refugee transportation sector को डेवलप करिबा इन्फ्लेशन जोटा प्राइस हाइक होची प्राइस हाइक को कंट्रोल करिबा एवं पावर सप्लाई करिबा एवं कोन कहली एवं पावर सप्लाई करिबा ना दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यार अप्राइजल हमें देखिबा it was food production it was successful because there was good harvest
in the last 2 years. But rehabilitation of refugee price control, they are less achieved. They are less achieved. They are less achieved. बुझीगला. Then second plan, ये time period भी पचारि पारे 1956 through 61 पर्यंत time period, but it was not implemented due to shortage of foreign exchange. Not implemented due to shortage of foreign exchange. So एटी hydroelectric power projects 5 steel mills कोड आला विलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला. उना विलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला. Now, what was the model used? The model used was Nehru-Malnovis model. It was adopted. What model? Nehru-Malnovis model was adopted. बुझेला एटी फोकस करा गला कहा पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन with emphasis on development of basic and heavy industries. को industry basic and heavy industries. ये time period रे industrial policy resolution 1956 आसिला. First industrial policy होची इंडिया रो 1948. industrial policy resolution 1948. Please remember industrial policy resolution 1948 है ना. It decided India to be a mixed economy. 18 decide ହେଲା कि इंडिया को mixed economy बोली कुआ जाय. इंडिया एउठु ही कोन हला ना एउठु ही गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी हला. So this plan focused on rapid industrialization, heavy and basic industries. They advocated huge import through foreign loans. They advocated for huge imports through foreign loans. So there was acute shortage of foreign exchange. जेतु foreign loan ऊपर अधिक dependency बढ़िला, there is acute shortage of foreign exchange. There is acute shortage of foreign exchange. So price rise was also seen about 30% price rise एटी देखिया को मिला, but it was only moderately successful. तापर असला third 5-year plan. Third plan ना duration थिला किते ना 1961 to 66 third plan. But this plan was a failure. कहीं कि ना 1962 Indo-China war, 1965 Indo-Pakistan war. So it was a failure because of wars and drought. Panchayat elections were started इस समय. State electricity boards, state secondary education boards, they were formed. For state electricity board and state secondary education board ये सब create करा गला है. Now objective कौन सा ना self reliant economy एवं to increase national income by 5%. National income increase करियो by 5% एवं कौन आनी वो self reliant economy. माने निज ऊपर निज आत्मनिर्भरशील इकोनॉमी आउ बाहर ऊपर हमरो डिपेंड करियार नाही. आत्मनिर्भरशील इकोनॉमी, आत्मनिर्भरशील अर्थनीति हैला. Then self generating and disparity reduction. Disparity by inequality reduce करियो कोटना in India. तापर मु कहिली ऑलरेडी 1962 Indo-China war, Indo-Pakistan war in 1965. सेतिपाई there are 3 annual plans 1966 to 69. 1966 to 69 आसला करना 3 annual plans. So new agricultural strategy was implemented here. So it involved distribution of high yielding variety seeds, extensive use of fertilizers, exploitation of irrigation potential, exploitation of irrigation potential, soil conservation measures. ये सब गुड़ा को यूटिलाइज करा गला. So crisis in agriculture, serious food shortage ये समय देखिए को मिलला. Crisis in agriculture तो इटा में annual plan. तापर असला fourth plan. जेतु third plan was a failure and third plan पर हमें annual plan आनिले.
फोर्थ प्लान जिते गवर्नमेंट आनिला दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट वाज मोर एम्बिशियस गवर्नमेंट अधिक एम्बिशियस थिला बट रिजल्ट रे हमको कोन मिलिला इट वाज अ बिग फेल्योर and growth rate we achieved is 3.5% only. Now this low rate of growth low this low growth rate is called Hindu rate of growth. कौन को Hindu rate of growth. Hindu rate of growth किए कहला ना, it was said by Raj Krishna. It was said by किए कहले, it was said by Raj Krishna. Hindu rate of growth. Inflation rate एटी थिला, inflation rate was very high rate of inflation. Indira Gandhi government nationalized 14 major Indian banks. Only Indira Gandhi government nationalized 14 major Indian banks. The objective rohila kono na, objective rohila growth with stability. Objective kono na, objective rohila growth with stability. And objective was Garibi Hatao target. Objective khali growth with stability nuhe, growth with stability and Garibi Hatao. Na very important. Garibi Hatao kebe ase. Then fifth plan 1974 to 79. This was the period of high inflation. Inflation rate एटी बहुत अधिक थिला, high inflation rate. And Indian national highway system introduced for the first time. Objective was removal of poverty. Now poverty removal ए पर्यंत भी हेई नथिला. Even आप परे मध्य हेनी 1991 परे gradually poverty removal हेछि. Otherwise poverty removal नथिला Indian economic context. Sixth plan asla 1980 to 1985 पर्यंत. Objective कोन? And there was direct attack on the problem of poverty by creating conditions of an expanding economy. And most of the targets achieved here. Growth rate was 5.5%. So family planning, it was expanded in order to prevent overpopulation. Family planning method or family planning model एटी आसिला. In seventh 5-year plan. Next is seventh 5-year plan. Seventh 5-year plan आसिला 1985 to 1990. 1985 to 90. Now targets achieved. Growth rate 6%. जवाहर रोजगार योजना आसिला. ऑब्जेक्टिव थिला ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करबा एवं फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ेबा. कोन कहले एवं फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ेबा. Then increase employment opportunities. Increase employment opportunities. Employment opportunities increase हो. Then raise productivity increase हो. Next पुणी annual plan आसला जेहेतु it was time period of globalization 1991 रे आनिले हमें globalization 1991 रे India adopted LPG model of globalization याकू राव सिंह मॉडल बोली मध्य कुहा जाय. This is also called राव सिंह मॉडल. काहे कि ना से समय रे प्राइम मिनिस्टर थिले पीवी नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर के थिले ना डॉक्टर मनमोहन सिंह. Dr. Manmohan Singh. That is why this is called Rao Singh model. शीत भाई याको कहले कोन, this is called Rao Singh model. LPG model असला कोन 1991. And LPG model is based on the concept of globalization. It is based on the concept of globalization. Globalization has two branches कोन ना privatization and liberalization. Privatization and liberalization. बुझिला? These are two branches of globalization. These are two branches of globalization. Now globalization अर्थ कोन हम already discussion करथिली पूर्वरु. Globalization means treating the entire globe as a single village or single market. No restriction. Economy टा एटी open economy जो not closed economy. Open economy कोन? Open economy जो means export and import allowed. Export, import allowed. Export
import allowed, so এটা কইলে আমি কোন, this is called open economy. Now when it is not allowed, that is called closed economy. So globalization pre open economy को emphasis दिया गला. Private sector रो role बढ़िला, role of private sector increased. Private sector रो role बढ़िला. प्राइवेट कौन कहली, प्राइवेट सेक्टर रो रोल बढ़िला. लिबरलाइजेशन हला जो गुडा रेट टैपिज्म थिला, रेट टैपिज्म हटिला. कौन बोल जो रेट टैपिज्म थिला, कौन हला ना रेट टैपिज्म वाज रिड्यूस्ड. कौन हला रेट टैपिज्म रिड्यूस हला. ओके 8 5-year plan आसला 1992 to 97 आफ्टर एलपीजी मॉडल वाज अडॉप्टेड. एलपीजी मॉडल अडॉप्ट होला पर 92 to 97 आसला कोना 8 5-year plan. सो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, high growth of agriculture, allied sector, manufacturing sector, growth in export import, improvement in trade, current account deficit, ये सब start हला. These are the objective, reducing current account deficit, ये सब these are the objective. So export import को हमें promote करें, कहीं कि 1991 ने already economy open ही जाइए. कौन कहली 1991 ने economy open ही जाइए already. सेट पे हमें focus करें कहाँ पर ना export led growth, export बढ़ेगा, increasing exports. But this was partly success. Average annual growth rate was 6.78%. Target was 5.6%. ठीक है, देखो एटा मन देख. Now growth rate 6.78, but target हला कितना, target हला 5.6. Target 5.6, एटा हला कितने ना, एटा हला 6.78. It is clear. तो जदि क्वेश्चन आसे targeted growth rate was always higher than the achieved growth rate in all 5-year plans, true or false? Targeted growth rate was always higher than achieved growth rate in all the 5-year plans, true or false? कौन हो? This is true or false? False? Yes. Target 5.6 because 80 violate करिगला, 80 target 5.6, achieved 6.8. Achieved कितने? Achieved थी 6.8. Clear? Clear? Okay. Then 9th 5-year plan 1997 to 2002. तापर असला कोना 9th 5-year plan 1997 नु 2002. ये फोकस कला क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल बैलेंस एंड सेल्फ रिलायंस. क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करियो कोची, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करियो, रीजनल बैलेंस क्रिएट करियो एवं सेल्फ रिलायंस क्रिएट करियो. ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी.
now this is important, it is social justice ro एवं इक्वालिटी रो कथा 18 फर्स्ट टाइम पे उठुची 9th प्लान लेटी फर्स्ट टाइम ही सोशल जस्टिस एवं इक्वालिटी रो कथा उठुची हैला so it achieved GDP growth rate of 5.4%, lower than the target class 6.5 but achievement la कितना 5.4. now it social justice equality ऊपर हमें कहीं के डिस्कस करि करते ना because we have already achieved food security to some extent. So when people are hungry, when people are suffering from poverty, malnutrition, hunger, we cannot think about social justice and equality. So equality, social justice comes later as compared to malnutrition, hunger and food security. So first food security. खाइबा को मिले तो तापर सेकंड थॉट आनिबो ना नचेत केमति कोन भाबियो. then 10th 5 year plan 2002 ରୁ 2007 objective कोन ना to achieve 8% GDP growth rate, reduce poverty and to increase the literacy rate in country So it was successful in reducing poverty ratio by 5%, increase forest cover by to 25%, increase literacy rate to 75%, economic growth of the country over 8%. Then 11th plan 2007 ରୁ 12. Now यार objective थला rapid and inclusive growth. Now inclusive growth रो अर्थ होची for all. Inclusive growth कोन ना inclusive growth रो अर्थ होची for all, for everyone. Empowerment through education and skill development. कौन कहली empowerment through education and skill development. Then reduction of gender inequality, environmental sustainability, clean drinking water for all by 2009, economic growth rate of 8%. कहते economic growth rate कहते ना economic growth rate of 8%. Next 12th 5 year plan ना 12th 5 year plan रो objective कौन रहिला 11th plan रे जहाँ objective थिला 12th plan रे ताठु ताकु आउ टिके आगो को नबा बा ताकु आउ टिके डेवलप करिवार कथा आसला 12th plan हैला so real GDP economic growth real GDP growth 8%, agricultural growth 4%, manufacturing growth 10%. Every state must attain higher growth rate than the rate achieved during 11th plan. Poverty rate to be reduced by 10% by end of 11th 5 year plan. 5 crore new work opportunities. Education mean year of schooling to increase to 7 years. 20 lakh seats for each age bracket. Health, reduce IMR to 25, MMR to 1, increase child sex ratio to 950, reduce total fertility rate to 2.1. Then the infrastructure investment of 9% of GDP. Gross irrigated area increase of 103 million hectare. Connect the unconnected village. Now infrastructure development. Environment रे कौन आनिबो ना green cover increase करियो by 1 million hectare. 30,000 megawatt renewable energy during the 5 year period. Service delivery, banking service to 90% of Indian households. Subsidies and welfare related payment to be routed through Aadhaar based direct cash transfer scheme. Yes, faster, more inclusive growth, more inclusive and sustainable growth. तापर आसे हमें planning in Odisha. Planning in Odisha, Odisha रो planning condition देखिबा. ओडिशा रे गोटे डिपार्टमेंट अछि जानु प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट हला या पे गोटे कन्वर्जेंस सेल मध्ये अछि ना मु किछि इंपोर्टेंट स्कीम ऊपर डिस्कस करबी ओल्ड स्कीम्स बट वेरी इंपोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रीलिम्स परीक्षा पई ये स्कीम गुडा को बहुत इंपोर्टेंट हला हल कोन फर्स्ट स्कीम इज गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना यार ऑब्जेक्टिव कोन ना जो स्टूडेंट मानकर जो स्टूडेंट माने क्लास 1 रु 5 भीतर अछंती फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करा दियो फ्रॉम क्लास 1 to 8
एंड फ्री बाइसाइकल टू स्टूडेंट इन क्लास 9 देखना नवम श्रेणी पिला को मिलुनी बाइसाइकल फ्री बाइसाइकल मिलुनी नवम श्रेणी पिला स्कूल यूनिफॉर्म मिलुनी स्टैंडर्ड 1 वेट हैला कोड स्कूल संस्कृत टोल मद्रासा सबुठी नेक्स्ट मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना ये कौन करछि ये कौन करछि ना ये कुछ विथ व्यू टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म फॉर चिल्ड्रन अंडरगोइंग प्री स्कूल एजुकेशन और प्रोविजन ऑफ 34 crore has been made for 2017-18 now budget केते आउटले इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड बट यार ऑब्जेक्टिव कौन देखियो यूनिफॉर्म को माने को ना प्री स्कूल एजुकेशन जो माने जाउछन देन ओडिशा आदर्श विद्यालय स्कीम ओडिशा आदर्श विद्यालय जो सेंट्रल असिस्टेंस डिस्कंटिन्यू होइतिला सेठी आनिला कोन ना ओडिशा आदर्श विद्यालय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन कौन कहली मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन यार ऑब्जेक्टिव कौन यार ऑब्जेक्टिव होची इट एम्स एट कवरिंग इंटरवेंशन सच एज पब्लिक हेल्थ रिस्पांस हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एक्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज शिशु और मातृ मृत्यु हार संपूर्ण निराकरण अभियान संपूर्ण कौन कहली संपूर्ण योजना शिशु और मातृ मृत्युहार संपूर्ण निराकरण अभियान या ना रु ही जना पड़ुची ये शिशु मृत्युहार इनफैंट मोर्टालिटी रेट आईएमआर एवं मातृ मृत्युहार मैटरनल मोर्टालिटी रेट एमएमआर को रिड्यूस करिवो सिंपल कथा आईएमआर एंड एमएमआर टू बी रिड्यूस्ड नेक्स्ट निरामय स्कीम रे कोन हुई के कहबे निरामय स्कीम इज ऑल अबाउट फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव फ्री ड्रग्स मिलियो मेडिसिन गुडा को फ्रीली मिलियो फ्री ड्रग्स initiative free drugs initiative then Vastudha scheme Bakshi Jagabandhu assured water supply to habitations एथरे कोन मिलिवो ना safe and clean drinking water urban water supply and rural water supply safe and clean drinking water हला कौन कहले safe and clean drinking water next Odisha PVTG empowerment and livelihood improvement program this is an externally aided project for employment and income generating activities for tribal population कहां पे ना this is for the tribal population हला ओडिशा पीवीटीजी एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कनेक्टिंग अनकनेक्टेड विलेज हला एटा कोडा ना जोडा एलडब्ल्यू अफेक्टेड रीजन्स एलडब्ल्यू माने जोडा को माओवादी कहउछ माओवादी अफेक्टेड रीजन रे ये कोन करबो ना रास्ता प्रोवाइड करबो कोन करू ना ये माओवादी अफेक्टेड रीजन रे रोडवेज प्रोवाइड करबो urban transformation initiative unnati urban transformation initiative so there is recognition of need for improvement of urban infrastructure ye urban infrastructure develop kariyo improvement of urban roads provision of civic amenities improvement of urban roads and provision of civic amenities अन्वेषा स्कीम रे कोन हो ना फ्री क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूसिव ऑफ ट्यूशन फी यूनिफॉर्म बुक्स ट्रांसपोर्टेशन फूड को मानकू ना टू द SC/ST स्टूडेंट्स टू द SC/ST स्टूडेंट्स इन द बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अर्बन एरिया अन्वेषा सेमति आकांक्षा एटा SC/ST यूथ जो माने हॉस्टल ले रहउछन अर्बन एरिया रे समान को प्रोवाइड करा जाय कोडी कहली SC/ST स्टूडेंट्स यूथ जो माने हॉस्टल रे रहउछन समान को ये स्कीम दिस स्कीम विल बी प्रोवाइडिंग हॉस्टल एमिनिटीज देन मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्ति रो ना समस्त सुनिथिबे मिशन शक्ति कोन कहली मिशन शक्ति ये महिला सशक्तिकरण पे वुमेन एम्पावरमेंट पे ये स्कीम आसी
बिजु कन्या रत्न योजना डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो पई आसिला कोन ना बिजु कन्या रत्न योजना कोन पई ना डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो पई आसिला बिजु कन्या रत्न योजना देन बिजु शिशु सुरक्षा योजना बिजु शिशु सुरक्षा योजना ऑब्जेक्टिव कोन इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नेट टू चिल्ड्रन especially those whose parents are affected with HIV AIDS वरिष्ठ बुणाकार सहायता योजना बिकॉज HIV AIDS इन्फेक्शन कौन हो पारे चिल्ड्रेन मान को पारे तो चिल्ड्रेन टाको ये प्रोटेक्ट करियो कौन करो प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन वरिष्ठ बुणाकार सहायता योजना ये कौन हेरिटेज ओडिशा रो हेरिटेज आर्ट और क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करिया पई आसीछि वरिष्ठ बुणाकार सहायता योजना बुझेला सो इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड विथ प्रोविजन ऑफ 5 करोड़ 2017-18 5 करोड़ को मान को ना जो माने वीवर तंती जो माने बुणुचंदी बुणाकार से मान प्रोटेक्ट नाउ आ गोटे क्वेश्चन मोर जदि जने ओडिया रे पीजी पीएचडी करिया को चाहूची सी कोन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी करि परिबो लाइक जेएनयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी करि परथिला कि आगरु करि पारु नथिला बट एबे गवर्नमेंट कोन कला ना गवर्नमेंट आनिला ता पई सब चेयर ऑफ ओडिया स्टडीज क्रिएट कर देला कोडी कोडी ना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रे भक्त कवि मधुसूदन दास को नारे मधुसूदन राव को नारे हैला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रे इन द नेम ऑफ कुंतला कुमारी सावंत आदि कवि शारदा दास को नारे कोडी ना जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रे क्रिएट कला एठी हायर स्टडीज करि परिबे ओडिया लैंग्वेज रे ठीक अछि क्लियर ना एति की स्कीम मनइला कि नहीं 17टा स्कीम कहली ओडिशा गवर्नमेंट रो 17टा स्कीम ऊपर डिस्कस करली इज दिस क्लियर all the 17 schemes clear all 17 schemes clear no doubt next KBK region ऊपर देखिबा disparity in KBK region now देखो this is the map of KBK ए पर्यंत किछि डाउट अछि कि एनी डाउट सब स्कीम सर मन रही जीवो धीरे धीरे मन रहिबो पढिले मन रहिबो बारंबार मते को डाउट अछि कि किछि क्लियर तो यस सर ऑल नॉट नो प्रॉब्लम मन रहिबो धीरे धीरे मन रहिबो किछि व्यस्त होवा नै सब मन रहिबो धीरे धीरे पढिले दि चार थर से मन रहि जो ओके आगो बुझिबा चलो देखो केबीके रीजन ओडिसा रे देखो मैप रो देखि परथु एटा होची केबीके रीजन एटा ला केबीके रीजन ओडिसा मैप रो देखि परथु दिस इज द केबीके रीजन सो एटा होची अनडिवाइडेड कोरापुट जोटा कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा अनडिवाइडेड बलांगीर सुवर्णपुर बलांगीर अनडिवाइडेड कलाहांडी कलाहांडी नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट को नेकी एटा क्रिएट होची एंड दिस इज द poorest and most backward region of the country
सो इटी रूरल पॉवर्टी इंडेक्स जदि हम देखा 87.14% कहते ना 87.14% रूरल पॉवर्टी and this region also suffers from acute economic social gender disparity जदि आम पॉपुलेशन देखा जोग्राफिकल एरिया हूँ 30% ओडिशा टोटाल पॉपुलेशन जदि देखा पाखापाखि 20% 19 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन 20% जोग्राफिकल एरिया केते कहली जोग्राफिकल एरिया हूँ 30% बट दिस इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन या पे गोटे प्लान आसला रिवाइज्ड लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान RLTAP है ओडिशा गवर्नमेंट या पे प्लान आनला कना बिजू केबीके प्लान केबीके रीजन को डेवलप करिया पे आनला बिजू केबीके प्लान सो बिजू केबीके प्लान नो ऑब्जेक्टिव रहला टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट इन दिस रीजन इट विल एक्सेलरेट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम पॉवर्टी रिड्यूस करिवो ई जोन ई रीजन कौन करिवो पॉवर्टी रिडक्शन करिवो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाइबो लोकल पीपल्स मानक इट विल ब्रिंग द रीजन एट पार विथ अदर डेवलप्ड रीजन्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े लाइक क्रिटिकल रोड ब्रिज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट टैंक वाटर सेट डेवलपमेंट मार्केट एफोरेस्टेशन ये सब बढ़े डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एंड सब डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक लाइवलीहुड सपोर्ट एनिमल रिसोर्स को यूज करियो फिशरीज एफोरेस्टेशन फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइज माइक्रो क्रेडिट है It will mobilize and empower the rural poor through SHG, Mon Sarankshan Samiti, Pani Panchayat, participatory planning. It will promote quality education, strengthening social security systems, food security, old age pension, nutrition program. It will enhance development effectiveness through convergence of resources, programs. Traditional knowledge को synthesize करियो. Now next question, why is Odisha poor? Last topic discuss करियो. Why is Odisha poor despite of having so much of resources? बहुत resource अच्छे Odisha पाखरे. कौन resource? There are many resources like mineral resource, river resource, port, fertile land, irrigational facility, coastal plain. Still Odisha is poor. Why? What are the causes? What are the causes? कौन कॉज ना नेचुरल कैलामिटी अनटैप्ड पोटेंशियल अनटैप्ड माने जति रिसोर्स अछि हमें तार यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली करि परने नो कनेक्टिविटी नाही बहुत जगह को लिटरेसी रेट लो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी नाही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और एबिलिटी जीरो नाही और नॉट अप टू द मार्क नॉट अप टू द मार्क low industrialization LW left wing extremism solution यार कौन ही पारे solution development rate बढ़ेबो आ कोन LW टा को reduce करि परियो this is what you can ठीक अछि now any doubt on this ई पर्यंत समस्त क्लियर ना डाउट जदि डाउट रहिला पचार जदि या भीतर किसी डाउट रहिला ताले पचार ताले कोन पढिले हमें आजिर क्लास रे टिके रिकॉल कर देबो मते रिमाइंड कर देबो को टॉपिक देखले हमें मते स्कीम गुडा खाली रिकॉल कर दियो जो स्कीम मानक ऊपर हमें डिस्कस कले से स्कीम गुडा ओडिशा स्कीम स्पेसिफिकली पचारची मते को गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना इट इज रिलेटेड टू एटा को रिलेटेड खाली कहबो गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना एटा को रिलेटेड दिस इज रिलेटेड टू this is related to
लिखो फ्री यूनिफॉर्म एंड बाइसाइकल। देन मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना। प्राक विद्यालय माने कौन? प्राक विद्यालय माने कि प्री स्कूल एजुकेशन माने कि माने प्री स्कूल एजुकेशन। ओडिशा आदर्श विद्यालय 60 आदर्श विद्यालय ओपन हम ओडिशा। यस वेरी गुड शिवांग। ओडिशा आदर्श विद्यालय स्कीम इज रिलेटेड टू ओडिशा आदर्श विद्यालय स्कीम इज रिलेटेड टू कौन? मॉडल स्कूल्स। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन खाली कीवर्ड को स्वास्थ्य सेवा मिशन इट इज रिलेटेड टू ना एटा तुमर एबे हे जाई कोन सेटा यार ना जो आयुष्मान भारत सहित एटा मर्ज हे कि कोन हे जाई GJAY गोपबंधु जन आरोग्य योजना। गोपबंधु जन आरोग्य योजना। संपूर्ण शिशु और मातृ मृत्युहार संपूर्ण निराकरण अभियान संपूर्ण एटा कोन व्हाट इज द कीवर्ड हियर इट कोन रिड्यूस करो इट विल रिड्यूस कोन रिड्यूस करो इट विल रिड्यूस IMR एंड MMR कोन करो IMR और MMR रिड्यूस करियो। निरामय इज रिलेटेड टू निरामय इज रिलेटेड टू free drug initiative very good। Now Vasudha is related to Vasudha scheme is related to safe drinking water। Vasudha is related to drinking water। Then PVTG empowerment by connecting unconnected village Maowadhi area development by Unnati urban infrastructure Anvesha is related to बुक्स ट्रांसपोर्टेशन यूनिफॉर्म ये सब प्रोवाइड करो SC ST स्टूडेंट मान। आकांक्षा SC ST स्टूडेंट मान को प्रोवाइड करिवो हॉस्टल फैसिलिटी। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मिशन शक्ति माध्यम वुमेन एम्पावरमेंट। बिजु कन्या रत्न टा कोन पई डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो टा को इंप्रूव करिया पई बिजु कन्या रत्न योजना। बिजु शिशु सुरक्षा योजना शिशु मान को प्रोटेक्ट करिया पई। वरिष्ठ बुनाकार सहायता योजना वरिष्ठ बुनाकार सहायता योजना वरिष्ठ बुनाकार को प्रोटेक्शन दवा। देन ओडिया स्टडीज तीनटा जगह आसी गला ठीक अछि एति कि बुझिला ना बुझिला ना इनक्लूसिव और फास्टर ग्रोथ टा कोडी हम पढिले मोर इनक्लूसिव एंड फास्टर ग्रोथ कोडी पढिले हमें मोर इनक्लूसिव एंड फास्टर ग्रोथ को 5 ईयर प्लान में इन व्हिच 5 ईयर प्लान more inclusive and faster growth in which 5-year plan गरीबी हटाओ कोडी आसला गरीबी हटाओ
more inclusive first last को आसला 12th 5-year plan. Now what is the last 5-year plan? What is the last 5-year plan? Now planning commission is replaced by which organization? Plan holiday कहा को कहा जाए बा जोटी annual plan आसला को time period? Last 5-year plan की last 5-year plan ला 12th 5-year plan. Last 5-year plan 12th 5-year plan. Plan holiday कहा को कहा जाए? Plan holiday प्लान हॉलिडे को ईयर कोड को ईयर इंडो चाइना वार केबे इंडो पाकिस्तान वार केबे इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान वार केबे प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग वेरी गुड गिरिजा इंडो चाइना वार केबे हला नॉट 1967 और इंडो पाकिस्तान वार केबे हला 1962 एंड 65 प्लान हॉलिडे एटा क्वेश्चन आसे सबले जोटी एनुअल प्लान हम आनी 1966 थ्रू 1969 ओके एलपीजी मॉडल केबे आसिला बा इकोनॉमिक रिफॉर्म केबे हला एलपीजी मॉडल केबे आसिला एलपीजी मॉडल इन 1991 ताले हम आज कोन पढले प्लानिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म सब कवर करी